Okay, we are live. Hello, good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another Hindu analysis for 9th of October. How many of you are here with me today? Can I get some responses in the chat box, please? Responses in the chat box if you are here. Okay, Mishika is here, Priyanshi is here. Let's wait for a few more people to join us. Devanshi is here. Hello, good evening. Good evening to all of you. Very, very good evening. How is everyone's preparation going? On a scale of 0 to 10, how is GK and current affairs going? On a scale of 0 to 10, please tell me in the chat box very quickly. कैसी चल रही है आप लोगों की preparation for GK? What are the challenges you guys are facing? What are the achievements you guys have unlocked this particular month or this particular week? How is everything going? Let's have a little chat. Okay, many of you are here. Tanishka is here, Alia is here, Adrija is here, Trisha is here, Riddhi is here, Shivain is here. Good evening, everyone. Medhavi says 6. Riddhi says 8.5. Hello, Anamitra. Shivain says 6 on 10, hoping to get better. Mishika is saying momentum is slow, but getting there 6 on 10. Okay, not bad. What is stopping you guys from getting to an 8? Is it getting demotivated due to mock scores? Is it not being able to do your revision? Is it not being able to get time to cover current affairs every day? What is stopping you from getting to an 8 or 9 in GK and current affairs? Let's talk a little bit about that before we begin today's class. What are the dikkatein? What are the mashakkatein? What are the challenges? Okay, I can see some responses. Let me also share my presentation with you all before we begin the session. Screen, Hindu analysis. Okay, 9th October, here we go. Okay, let me look at your responses now. Feeling lost. Okay, 2026 aspirant, that's okay. If that is the case, then you have time. That does not mean you need to not be serious, but you have time. It's all right. Anamitra says 7 on 10. Shivain is saying it's mostly backlog. Mishika is saying no matter how much I cover GK and current affairs, the GK and mock still feels otherworldly. So it's a little demotivating. Okay, I can understand that. That's relatable. Mostly just static GK. Difficult to understand what's important and what's not at times. That's also a valid concern. Nandan is saying demotivated from mock scores and revision is not consistent. Mock scores. Will we discuss PSLV 37? We can. Revision of previous months, Jan to April, is done because of mentee. That's great. See, that is the advantage of being consistent and diligent with the schedule. If you are having a mentee and if you go and revise that particular month, that would serve two purposes. Firstly, you will perform better in the mentee quiz. That would serve as a motivation to you. And secondly, you would be able to do your revision with that motivation. So the next mentee is on the month of May, which is going to happen tomorrow. Not tomorrow, sorry, Friday. And make sure you prepare for that. So अभी तक अगर आपने वो नहीं किया, तो please start doing your revision. Please start covering your backlogs on an immediate basis. And mock scores को ना उतना ज़्यादा भी सर पे मत चढ़ाओ. Make sure you do not overemphasize the importance of mock scores. Mock scores fluctuate होना is a normal thing. As long as you are learning everything from the mock, every mistake you make, as long as you are working on those mistakes, that is a good thing. Mocks are for practice. Mocks are not the end of the journey. Mocks are just a part of the journey. So
ऐसा भी नहीं है कि मॉक्स को हल्के में लेना है एंड स्कोर्स अगर डाउन जा रहे हैं तो यू कैन जस्ट बी चिल अबाउट इट, बट don't over emphasize and don't get too emotionally attached to the outcome of a particular mock. Okay, Devyansh is also here. Good evening. Chalo, let's start our discussion for the day. If everyone is ready to start, can we get a ready in the chat box very quickly if all of you are ready to start today's discussion? Should we start? Some responses in the chat box would be highly appreciated. Okay, ready. Riddhi is ready. Everyone is ready. Medhavi, Tanishka, Namitra, Rudra. ठीक है, चलो, let's start. So today is 9th of October. We are back with another Hindu analysis and we have multiple agendas for the day. Let's look at the agendas. Firstly, this is an editorial article about Britain shutting down its last coal-fired plant. This was in Nottinghamshire. The editorial talks about how Britain has transitioned from coal-based power to natural gas-based power and other renewable resources, and how India has a different situation. India cannot do that transition very quickly. So Britain had made this particular pledge in 2015 that they would phase out their coal-based power plants by 2025, and they have achieved that. But can India do that? Is it possible for India to shut down its thermal power plants and reduce its reliance on coal drastically? We'll look at that when we discuss the article. Then there is a report, the USCIRF report. This is an independent organization body from the USA, which says that religious tension in the country is increasing, prosecution of minority is increasing, and all of those things. So Indian government has officially rejected this report and they have called it to be biased in nature. So we'll discuss about what the report is saying. Then you have the Nobel Nobel Prize in the subject of physics. Who are the two people who have won that particular Nobel Prize? Can you guys tell me in the chat box very quickly who are the two winners of the Nobel Prize in the field of physics for this year? Very important news. Then we have another article in text and context section, which is about Global Digital Compact Summit. This was a summit called the Summit for the Future, which was held in USA, in Washington, DC, I guess. And वहाँ पे we discussed the importance of developing AI technologies, new emerging technologies, and how we can form a framework for governance of these technologies. So we'll talk about that. It is not a binding framework, it's not a binding law, but it's more of a diplomatic, strategic partnership sort of a thing. Then there is another news piece which talks about the WHO's declaration on how India has eliminated trachoma and has become the third country in Southeast Asia to eliminate this particular disease. This is a disease which affects your eyes and India has eliminated it. फटाफट फैक्ट्स नहीं है आज के एजेंडा में बिकॉज काफी सारी न्यूज ऑलरेडी है टू कवर. वी हैव आवर वोकैबुलरी though, so vocabulary is there. Okay, chalo. So that is the agenda for the day, and let's start without any further ado. I have some responses about the Nobel Prize. John Hopfield and Geoffrey Hinton, absolutely correct. And for what? For what field? For what contribution? What have they done? जिनके लिए उनको Nobel Prize से नवाजा गया है. Tell me in the chat box. बता सकते हो आप. वैसे इतना ही डिस्कस करना है उस पर्टिकुलर न्यूज में, तो चलो ठीक है. Let's start with the first article. This is an editorial article which says sunset for the UK's coal-fired power and what are the lessons for India. So जैसा कि मैं आपको बता रहा था, the last coal-fired power plant which is in Nottinghamshire has now closed. This is a county in Britain. So जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे काउंटीज होती है. सो नॉटिंघमशायर में जो लास्ट उनका कोल फायर पावर प्लांट था, दैट हैज शट डाउन प्रोडक्शन ग्लोबली, एंड अब ये धीरे धीरे अपने कोल को पूरी तरीके से फेज आउट करते जा रहे हैं, कोल बेस्ड पावर जनरेशन को. When did they take this pledge? As I was telling you, in 2015 Paris Convention, they said that by 2025 they would be phasing out coal based energy from the country. And इसकी शुरुआत और भी पहले हो गई थी, when the city of London faced a great smog. Can you guys tell me the year? When was the great smog of London? This was a
famous historical event. Great Smog of London. Does anyone of you know which year am I talking about? Any guesses in the chat box? ओके, प्रियांशी सेज 1952, रिद्धि सेज 1952. काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं दोनों क्वेश्चंस के लिए. मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड 1952 इज आल्सो द करेक्ट आंसर. तो 1952 में आया था ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन. एक बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें पूरा लंदन स्मॉग से कवर हो गया था. मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. एंड उसके बाद इन्होंने बनाया 1956 में, ब्रिटेन ने बनाया क्लीन एयर एक्ट, and they laid down certain guidelines, certain regulations on how they would control the production of coal. उसके बाद एक और contributing factor for them to phase out coal naturally from their ecosystem, from their energy ecosystem, is that they discovered reserves of natural gas in North Sea. तो अगर आपने geography देखी होगी तो UK is situated very close to North Sea, and in 1965 they discovered natural gas in the North Sea region, which helped them transition from coal based energy to gas based energy to a great extent. Another thing was, another reason why they moved away from coal based energy was because a lot of coal which they used in the factories was imported. And कहाँ से import होता था? वो होता था सोवियत यूनियन से import. तो जब कोल्ड वॉर हुआ एंड सोवियत यूनियन के साथ उनके रिलेशनशिप जो है थोड़े से चेंज हो गए, इवॉल्व हो गए, यूके केम क्लोजर टू द यूएस साइड रादर देन द सोवियत यूनियन साइड. तो उस वजह से कोल का इंपोर्ट भी कम हो गया, एंड बिकॉज कोल का इंपोर्ट कम हो गया, कोल का प्रोडक्शन भी कम हो गया. सो धीरे धीरे थिंग्स हैपेंड एंड कोल स्टार्टेड गेटिंग फेज्ड आउट. फिर 2021 में ग्लासगो में जो क्लाइमेट ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीओपी कॉन्फ्रेंस जिसको आप कहते हो, उसमें भी इन्होंने बोला था कि वी वुड फेज आउट कोल. अच्छा, इंडिया का टारगेट क्या है? व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशंस? व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशंस? विच ईयर? 2070, दैट्स करेक्ट. 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बनना चाहते हैं. एज ऑफ नाउ हमारी रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन? इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कार्बन एमिटर ऑफ द वर्ल्ड. कैन यू टेल मी विच पोजिशन आर वी एट? Which position? Third. We are at third position. We are behind US and China. Right? And कोई मुझे बता सकता है fourth position पे कौन है? Does any one of you know who is on the fourth position in terms of carbon emission? Which country is at fourth position? India is at third. That's correct. Yes, it is UK. It is United Kingdom, which is at fourth position. ठीक है, तो अब यूके किसी पोजीशन में नहीं है टू डिक्टेट us that we should also phase out coal production because they have phased out coal production, because multiple reasons. First is UK is a very small country. We are approximately 20 times more in population as compared to UK, so obviously carbon emissions would be more. Another reason is we are a developing economy, we are a growing economy, we are a young economy, and we haven't achieved our entire output of coal production, the entire efficiency which we can derive out of coal production, that we would achieve somewhere around 2030 to 35. So we are not even at the stage which UK was multiple decades ago. So it is unfair to compare India's energy transition to UK's energy transition, and that is what this particular editorial article is टॉकिंग टू यू अबाउट. अच्छा, इंडिया में कोल का प्रोडक्शन स्टार्ट किसने किया था? दैट आल्सो इज अ, यू कैन कॉल इट अ बून और अ बेन. दैट वाज ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, व्हिच वाज इंडियाज फर्स्ट कोल माइन. India's first coal mine was discovered by the Britishers, but can you guys tell me the name of India's first coal mine?
India's first coal mine was at which place? Any idea? Any guesses? Anyone who has read this article would know. It was in Raniganj, Jharkhand. So as of now, states like Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, MP, these are the major coal producing states of India which have the maximum coal mines. And the first was in Raniganj. And this was discovered by the Britishers in 1774. So quite a long ago. But जो हमारा coal से power production start हुआ था, that started in 1920, which was the first power plant, coal-based power plant in India. The first coal-based power plant in India was Hussain Sagar Thermal Power Station, which was in Hyderabad in 1920. Hussain Sagar Thermal Power Plant Station in Hyderabad. This was developed under the rule of the Nizam of Hyderabad at that time. And जैसा कि I was telling you that India is yet to reach its peak coal production 2030 से 35 तक हमें वेट करना पड़ेगा to reach our peak coal production as well as consumption. एंड ब्रिटेन जो है 80 साल पहले ही इस स्पॉट पे पहुंच चुका था. सो दैट इज व्हाई द टाइमलाइंस कैनॉट बी इक्वेटेड, कैनॉट बी कंपेयर्ड, एंड इंडिया वुड work on its own pace to phase out its energy transition from coal to green energy, although we are doing multiple initiatives and steps to phase out non-renewable resources. But yes, it would take its time. So that is what this article is all about. Let's move on to the next piece of news, which is related to USCIRF report. Now, what does the USCIRF report say about India? The first question. तो रिपोर्ट ये कहती है कि अच्छा, फर्स्टली यूएससीआईआरएफ है क्या? यूएससीआईआरएफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. राइट इट डाउन. यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. Okay, so this is a Washington DC based organization. Washington DC based organization which analyzes and overviews different countries and how religious freedom is being offered in those countries. So 2 अक्टूबर को इनकी एक रिपोर्ट आई जिसमें they said that India का जो religious freedom है that is collapsing. The exact word they used was collapsing religious freedom conditions in India. And they have highlighted multiple things that minorities are being killed and lynched by vigilante groups. Religious leaders are being prosecuted and arbitrarily arrested. Places of worships are being demolished. तो ये चीजें मैं लिख देता हूँ आपके लिए. Threat to minority. Threat to religious freedom. And what else? What else is there? Then you have places of worship being demolished. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है. दे हैव रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. हमारे जो फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कह दिया है कि दिस रिपोर्ट इज बाय अ बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन. दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड प्रोपोगेंडा एंड वी डू नॉट बिलीव द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कहती है कि हम एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशन है and we operate without any influences, without any propaganda. But yeah, it is what it is. What do you guys think? Is the report correct? Do you think that what they have claimed in this particular report is true, or is that not true? If that's true, you can write a yes in the chat box. If you think it's untrue, you can write a no in the chat box. ये जो 3 चीजें इन्होंने बताई हैं रिपोर्ट में, what do you guys think about this? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, उनका नाम है रणधीर जायसवाल, एंड ही हैज रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट. रणधीर जायसवाल, स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है. ओके, वी हैव सम रिस्पॉन्सेस. Some people are saying yes, some people are saying no. Medhavi is saying, is the report important? No, you do not have to go into the depth of it, but क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, तो I thought maybe we should have a discussion around it. इस टाइप के आर्टिकल्स कई बार पैसेजेस में आ जाते हैं, so उस वजह से मैंने कवर कर लिया. बट हाँ, इट्स गुड टू नो. वन लाइनर में आ सकता है, यू नेवर नो. Okay, no, yes, partially false. ठीक है, mixed opinions in the chat box. We'll not
get into if it's true or if it's not. The government has declared that it's not. So, okay. I mean, what to say about that? ठीक है, you are entitled to your own personal opinions. Chalo, the next news, which we already sort of discussed already, is John Hopfield, this guy, gentleman, and Geoffrey Hinton, this gentleman, have won the Nobel Prize in Physics for their contribution to what? For their contribution to the discovery of how machine learning is enabling artificial neural networks. What are artificial neural networks? These are nodes which are used to process large amount of data, right? You must have heard about machine learning models or artificial intelligence tools like ChatGPT, Gemini, etc., etc. So all of these models operate on neural networks, and they have contributed significantly to how artificial neural networks can work and how they can be improved. So इन्होंने जो technology develop करी है, इन्होंने जो research publish करी है, that enhances the capability of artificial neural networks, जिनको हम short में ANNs कहते हैं, and how. Okay, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं. Let's go to the newspaper and read this article. ये interesting article है. I'll show it to you. I'll expand this a little bit, zoom it a little bit. ठीक है, देखो. They're saying that while many areas of research have used machine learning modules and artificial neural networks to process data, these terms have entered the household thanks to ChatGPT. Work of the Nobel laureates concerns the theoretical foundations of machines that can learn without humans teaching them and can use their knowledge to answer questions, right? So that is called machine learning essentially. ANNs are collections of neurons, or more broadly nodes capable of processing data connected in specific ways. So जैसे आपकी body में neurons होते हैं which do the same thing. Similarly, these are the nodes and neurons. In a recurrent neural network, information can flow both ways. This is what their discovery is, that both ways neurons and data can flow. एंड फिर उनके बारे में बैकग्राउंड दिया गया है. टाइप ऑफ रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन्होंने डिस्कवर किया है. दे कैन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड इन Hebbian learning manner, which is an idea in neuropsychology that if one neuron repeatedly triggers a circuit, the connection becomes stronger. तो ये इन्होंने एटॉमिक थ्योरी से भी इसको कोरिलेट किया है. द रूल्स ऑफ हॉपफील्ड नेटवर्क आर बेस्ड ऑन फिजिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, each producing its own small magnetic field. The processes the network performs to complete an incomplete pattern or to denoise an image are the same ones by analogy would reduce the total energy of the magnetic atoms. तो ये बहुत ज़्यादा scientific terms में हम नहीं जाते, but what you guys need to remember is artificial neural networks, machine learning, and their names, and they have won the Nobel Prize for Physics. The factual piece of information है. अच्छा, Nobel Prize award कौन करता है? That is also mentioned. Royal Swedish Academy of Sciences awards the Nobel Prizes. There is one particular type of Nobel Prize which is not awarded by the Royal Swedish Academy, but another organization. Can you tell me which Nobel Prize I'm talking about? Oh, which Nobel Prize I'm talking about? Yes, सही तो बोला मैंने आंसर बता दिया. The Peace Prize. And कौन देता है Peace Prize को? Which organization awards the Peace Prize? Yes, Riksbanks or the Sweden Central Bank by. Acha, you are talking about economics. Peace Prize is by Norway and economics वाला is by your that. मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यार मिशिका आपने. मैं कहा ये क्या बोल रही है यार. पीस प्राइज इज बाय नॉर्वे. ठीक है, नॉर्वे की जो कमेटी बनती है वो देती है पीस प्राइज. बताओ, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया. कोई बात नहीं. तो द आंसर वाज पीस प्राइज. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. दिस इज अनदर समिट व्हिच हैज हैपेंड, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, एंड देखते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. लेट्स गो टू द न्यूज़पेपर, लेट्स सी. चलो न्यूज़पेपर हमने खोल ही लिया है तो ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स सी. बीजेपी कीप्स हरियाणा एनसी अलाइड बैक्स JNK. तो ये अगर आप पॉलिटिक्स थोड़ी थोड़ी फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कि एनसी लेड अलायंस जो है जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जीत गई है, एंड उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं CM बन जाएंगे. लास्ट टाइम 2014 में थे ये CM, सो 10 साल बाद ये CM बन रहे हैं फिर से जम्मू एंड कश्मीर के. एंड इधर कौन जीता है? हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी जीत गए हैं बीजेपी की तरफ से.
So he would be becoming the CM of Haryana. कांग्रेस काफी क्लोजली हार गई है हरियाणा में, एंड जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी हार गई है. तो या दैट इज द थिंग. पूरा न्यूज़पेपर आज भरा हुआ है असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल से. बट यस, दैट इज ऑल यू नीड टू नो कि कौन जीता है और कौन सीएम बन रहा है. अभी के लिए इतना काफी है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव टू डिस्कस. हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ अमरप्रीत सिंह, न्यूली अपॉइंटेड ही इज ऑल्सो, उन्होंने बोला है ग्लोबल स्ट्राइफ इज पॉइंटिंग टू द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स. तो हम अपने चैलेंजेस के लिए तैयार रहेंगे. अच्छा, ये रहा PSLV C-37. दिस हैज रिटर्न टू अर्थ. द अपर स्टेज ऑफ दिस लॉन्च व्हीकल हैज रिटर्न टू अर्थ. दिस वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन Feb 2017 एंड इट टुक 104 सैटेलाइट्स, जो उस टाइम एक नया रिकॉर्ड था फॉर अस एज अ कंट्री. सो अब इसका अपर स्टेज जो है अर्थ पे वापस आ गया है. इसमें एक दो चीजें और हैं फैक्चुअल विच यू गाइस कैन रीड, बट द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल इज दैट. ठीक है. और क्या है इधर आर्टिकल. ये हमने कर लिया. सनसेट फॉर यूके कोल फायर्ड पावर. इंडिया पैलेस्टाइन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. नोबेल प्राइज हमने डिस्कस कर लिया. सालिक सर वुड आल्सो बी टेकिंग एन एक्सक्लूसिव सेशन ऑन नोबेल प्राइजेस फॉर यू. सो बहुत ज़्यादा उसकी स्टैटिक एस्पेक्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ही वुड बी कवरिंग दैट इन डिटेल. दिस इज रिलेटेड टू इलेक्शंस. USCIRF रिपोर्ट हमने देख लिया क्या था उसमें. टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये भी पढ़ सकते हो. एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे स्लम्प कर गए हैं. मेजर रीजन जो यहाँ पे बताए गए हैं, दैट इज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेयर्स, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. तो ये पढ़ सकते हो आप, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. देन दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट. अब ये क्या है, एक डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है. सो अ डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ बाइंडिंग लॉ एज पर इंटरनेशनल लॉ. मतलब अगर आप इस डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे रूल्स आप पे बाइंडिंग हो जाएंगे एज अ कंट्री. बट येस, यू आर सॉर्ट ऑफ इन एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट दीज रूल्स, and it is expected out of you that you would conform and comply to these rules. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो साइन किया अभी हमने इन द समिट ऑफ द फ्यूचर. यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज ने, UN ने ऑर्गेनाइज कराया था ये समिट. काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पे आई, उन्होंने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट को, हाउ डिजिटल इनोवेशन इज एडवांसिंग, स्पेशली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये था. तो चलो देखो क्या है यहाँ पे. GDC, which is Global Digital Compact, ambitious instrument, potential of digital technologies. What is GDC? It's not a binding law, but a diplomatic instrument. Earlier, UN helped pilot legitimize two other compacts, Global Compact, etc., etc. ठीक है. Realizing the GDC, it's a collaborative project. Objective is human oversight of technologies for sustainable development. This is in conformation of international law and UDHR, which is your Universal Declaration of Human Rights, and your 2030 agenda of the UN. Artificial intelligence related है. UN member countries have committed to establish two panels, an independent international scientific panel on AI and a panel for global dialogue on AI governance. So ये दो keywords हैं जो आपको इस पूरे आर्टिकल में पता होने चाहिए. बाकी सब जो है इसमें GDC के क्या लेक्यूना है, GDC एंड UN कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, all of that is fluff. The gist of the article is these are the two goals: establishing an independent international scientific panel on AI and a global dialogue on AI governance. And another thing which you need to know is this is not a binding law, and this is done by UN. Okay, so that is about this particular article. Let's come back to our presentation and let's look at the last news piece of the day. India has eliminated trachoma, says WHO, World Health Organization. What is trachoma? Trachoma is a disease which affects the eyes of an individual. What is trachoma is caused by which species? Is it caused by a virus, a bacteria, or anything else? Fungi, whatever you call it. कैसे होता है ट्रैकोमा? ट्रैकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ट्रैकोमा से रिलेटेड, क्योंकि डिजीज रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही है, एमपॉक्स रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन चल रहा था. आई थॉट लेट्स डिस्कस दिस एज वेल. सो ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय अ bacterial
infection. This is a communicable disease. This can spread through direct contact. तो इसमें वैसा नहीं है कि in a particular way ही ये spread होगा. This can spread directly between two individuals. And WHO की जो साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर है साइमा वजीद मैडम, उन्होंने बोला है कि इंडिया बन गया है थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू थर्ड कंट्री in Southeast Asia to eliminate trachoma. बाकी दो कंट्रीज कौन से हैं? Can you guys tell me? Can you guys guess बाकी दो कंट्रीज कौन से हैं? चलो मैं बता देता हूँ. They are Nepal and Myanmar. Nepal and Myanmar are the other two countries who had already eliminated trachoma from their countries. Trachoma के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो it's a disease of the eye caused by infection and bacteria का नाम है Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. This is the name of the bacteria which causes this particular disease. This is a public health problem which occurs in approximately 40-42 countries. And इससे होता क्या है? इससे usually visual impairment हो जाता है. You get blindness, and this currently affects around 1.9 million people across world. 1.9 million. And this is prevalent in 42 countries, right? What are some other details which you need to know about trachoma? एक तो ये बात है कि ट्रैकोमा से जो ब्लाइंडनेस होता है ना, that is irreversible in nature. तो एक बार अगर आपको ट्रैकोमा हो गया तो it's pretty much gone. तो WHO की काफी गाइडलाइंस भी हैं ट्रैकोमा को काउंटर करने के लिए. एक जो गाइडलाइंस जो मेंशन करी जाती है, जो स्ट्रैटेजी है, that is called the safe strategy. तो ये फुल फॉर्म है ऑब्वियसली. इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. SAFE. What is the safe strategy? Safe में S stands for surgery. Surgery to treat the blinding stage. जब blindness चल रही होती है या blindness धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो you need surgery to treat blindness. What is A? A stands for antibiotics to clear the infection. Antibiotics to clear the infection. What is your F? F is for facial cleanliness and E is for environmental improvement. Facial cleanliness कि आप अपनी eyes साफ रखो and अपना environment भी साफ रखो. Environmental improvement. So this is the safe strategy which the WHO suggests. 17 countries हैं जिन्होंने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया. नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं. इंडिया का पता होना चाहिए. India is the third in Southeast Asia. And how does trachoma spread? It spreads through personal contact. Hand से, clothes से, bedding से, flies से भी spread होता है. This is a tropical disease. ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इतना छोटा आर्टिकल इसलिए आया बिकॉज दिस इज अ ट्रॉपिकल डिजीज. दिस इज अ डिजीज विच इज नॉट यूजुअली फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज. तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है ट्रैकोमा. इन ट्रॉपिकल कंट्रीज दिस इज मोर प्रेवलेंट एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन एंड डैमेज हो जाता है कॉर्निया को, जिस वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द डिजीज ऑफ ट्रैकोमा एंड इंडिया हैज सक्सेसफुली eliminated it, so that's a pretty good thing for us. Let's look at the vocabulary for the day. The first word for the day is delinquency. Delinquency का मतलब होता है a minor crime, especially that is committed by young people. So जो करते हैं उनको delinquent कहते हैं. ने सुना होगा शायद ये वर्ड कहीं ना कहीं मूवीज में, यूएस मूवीज में, क्राइम शोज में. delinquent. Synonyms are crime, wrongdoing, criminality. Antonyms are compliance, goodness, morality. There is high rate of juvenile delinquency in the area. ठीक है, so that is the first word. Let's look at the second word. The second word is fritter. Fritter simply means wasting time, money or energy on trifling matters. Squandering, wasting, misusing. Antonyms are conserve or save. I wish we had not frittered the money away. So frittered मतलब waste कर देना. ठीक है, बर्बाद कर देना. The third word for the day is galled. Galled simply means making someone feel annoyed. So चलो एग्जाम्पल क्या ही तुमने इसका. कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आया था मेरे दिमाग में, बट ठीक है. Irritate, annoy, bother is are the synonyms, and delighted, gladdened and gratified are antonyms. So that is the word galled. He knew he was losing and it galled him, it annoyed him. ठीक है, so these are the 3 words for the day, and that brings us to today's Hindu analysis. End of today's Hindu analysis. Medhavi is saying SpaceX broke this record with 143 satellites. Okay, I probably missed that news. So
I am not aware of this one, but I can verify that for you. So I'll definitely check and let you know. But अगर आप बोल रहे हो तो I'll take your word for it. ठीक है, can we look at the Indian Express too? Okay, sure, we can look at the Indian Express. Why not? We have some time today. Just give me some seconds to arrange the Indian Express for you. I have to jugado the Indian Express. Let me jugado it for you. Okay, okay, okay. Where is the Indian Express ka PDF? Just give me a few seconds, guys. You get it. खोजना पड़ता है. डाउनलोड हो जाए. डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा यार? हो गया हो गया हो गया. ठीक है, मिल गया इंडियन एक्सप्रेस. ये रहा आज का इंडियन एक्सप्रेस 9th of October. बीजेपी गेट्स पोस्ट 240 बूस्टर शॉट. तो ये वही असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है. पीएम ने बोला है स्लैप टू कांग्रेस प्लॉट टू डिवाइड ओवर कास्ट विल एको एल्सवेयर. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरियाणा इलेक्शंस जहां पे बीजेपी जीत गई है. एंड ये उमर अब्दुल्ला साहब जीते जम्मू कश्मीर में. ये तो हमने बात कर ही ली. यहाँ तो ऐड है. ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर? Add. Crackdown on old vehicles in public. If this is city related news for Delhi, so ये important नहीं है आप लोगों के लिए. और युगांडा का 62nd नेशनल डे है. नाइस. हैप्पी नेशनल डे टू युगांडा. Again city news. Then we have senior doctors resigned en masse. This is again related to the RG car case which is happening. So the junior doctors are still on protest, and to support them, a lot of senior doctors have resigned. More than 50 senior doctors have resigned. Okay, let's see what else is there. National Film Awards, this we have already discussed. Dada Saheb Phalke Award to Mithun Chakrabarti, and National Film Awards to Rishabh Shetty, Best Actor for Kantara, Nitya Menon, Best Female for her movie Three what is that name? यहाँ लिखा होगा थिरुचित्रम्बलम. यस. एंड बेस्ट डायरेक्टर किनको मिला था? सूरज बड़जात्या को मिला था फॉर ऊंचाई. राइट. सपोर्टिंग एक्टर नीना जी को मिला था. दैट वाज अगेन फॉर ऊंचाई. ओके. बॉम्बे हाई कोर्ट अलाउज सिंगल वुमन टू टर्मिनेट ओवर 20-week pregnancy. This is an interesting news. We can talk about this in tomorrow's analysis. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. काफ़ी बार इस पर काफ़ी जजमेंट्स आ चुके हैं. तो लेट मी डू सम बैकग्राउंड रिसर्च ऑन दिस एंड लेट्स डिस्कस दिस इन टुमारोज एनालिसिस सेशन में. आपको पूरा इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा बिकॉज आई बिलीव ये लीगल डेवलपमेंट्स वाले आर्टिकल्स जो हैं पूछे जा सकते हैं. सो लेट मी प्रिपेयर माई ब्रीफ ऑन दिस एंड देन विल डिस्कस दिस टुमारो. ओके. यहाँ पे विनेश फोगट जो हैं जीत गई हैं इलेक्शन. Haryana mein she stood for elections and she has won from the constituency of Julana, if I'm not wrong. Yeah, that is the name. Julana से जीती है ये. ठीक है. Okay, आज तो इलेक्शन ही है यार पूरे न्यूज़पेपर में. What exactly do you guys want me to talk about? ये मोहम्मद मीजू साहब आए हुए हैं इंडिया. ताजमहल लेके गए हैं अपनी माशूका को. This is again related to elections. कुछ इंटरेस्टिंग तो मिल नहीं रहा मुझे. To accommodate startups, Ministry of Information Technology relaxes AI compute procurement norms. Okay, interesting. The move is a part of 10,370 crore India AI mission to establish computing capacity of 10,000 GPUs. Okay, this looks interesting. तो ये आर्टिकल पढ़ लेना आप लोग.
इसमें टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, हाउ एआई कंप्यूटिंग वुड वर्क एंड व्हाट आर आर टारगेट्स एंड ऑल, बट यही है कि ये पता होना चाहिए आपको कौन से मिशन की बात हो रही है, इंडिया एआई मिशन, एंड क्या उसका ओवरले है, क्या बजट है 10,300 crore। बाकी तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। Domestic air passenger growth robust in September. Okay. Private equity investment in real estate hits $3.9 billion. Israel has killed Hezbollah leader, his potential replacements. Okay. काफी दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है यहाँ तो। बांग्लादेश इंडिया ties should be very close despite regime change, says मोहम्मद यूनुस, जो अभी वहाँ पे चीफ एडवाइजर है। ओके। Trump secretly stayed in touch with Putin after leaving office. Interesting. Okay. Why Supreme Court struck down caste rules in jail manuals? This we have already discussed. ये हमने डिस्कस किया था हिंदू एनालिसिस में. This is against right to equality, right against discrimination, abolition of untouchability, living with dignity, and prohibition of forced labors. ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ये जजमेंट दिया था हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, एंड अगर आपने ये वाला हिंदू एनालिसिस नहीं देखा तो मेक श्योर यू वॉच इट. मॉडर्न प्रिजन मैनुअल के जो रूल्स हैं उसको हमने अमेंड करना है वेरी सून, एंड कोर्ट ने इनको एक टाइमलाइन दी है कि भाई आप ये रूल्स को अमेंड करिए, क्योंकि प्रिजनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बेस्ड ऑन देयर कास्ट. दे वर बीइंग एलोकेटेड सर्टेन टास्क. सो अगर कोई पर्टिकुलर टास्क का है तो उसको क्लीनिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर कास्ट का है तो उसको कुकिंग के लिए. दैट वे डिस्क्रिमिनेशन वाज हैपनिंग, जिसको कॉग्निजेंस में लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. Making machines learn. Nobel recognizes scientists who work laid foundation of AI revolution. Their research helped enable pattern recognition in computers and tools like face recognition and image improvement. तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की हम बात कर रहे थे, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे इनपुट आता है वो बार बार हिडन नोड्स पे हिट करता है एंड फिर वो आउटपुट की तरफ पॉइंट आउट करता है. तो ये रहे जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन. ठीक है, 2023 में किसको दिया गया था? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एने ह्यूलर फॉर डेवलपिंग मेथड्स टू प्रोड्यूस attosecond pulses allowing exploration of scientific processes at subatomic levels. तो ये भी याद कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कई बार पिछले साल का भी पूछ लेते हैं कि पिछली बार किसको मिला था, एंड क्योंकि क्लैट में पैसेज बेस्ड न्यूज आती है तो ये पूछा जा सकता है. ठीक है. ओके, दिस इज अगेन इलेक्शंस. I think we are on the end of newspaper. K-pop India women rule the table. Okay, this is about the Asian Table Tennis Championship, I guess. Yes. And India का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें we need to win a must win game now to stay in the tournament. एक मैच हम जीते, एक मैच हार गए थे. ऑस्ट्रेलिया is on top of the tournament. If you guys are following that. मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो मैं फॉलो करता रहता हूँ. ठीक है, चलो. दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. देयर आर couple of articles which we can discuss tomorrow in detail, and yeah, we have looked at the Indian Express as well now. That brings us to the end of today's analysis session. Thank you so much for attending and participating. I'll see you all tomorrow in another Hindu analysis and a class on logical reasoning. If you have any suggestions on any topic which you want me to cover in tomorrow's logical reasoning class, you can let me know in the chat box as of now or in the comment section of this particular stream. Either way, abhi bata do to zyada achhi baat hai. If you want me to cover any particular logical reasoning topic. Any suggestions? या फिर should we do practice? मैं सोचा था हम प्रैक्टिस करें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की, एक पैसेज पे 4-5 क्वेश्चंस वाले. We want practice or any particular theoretical concept to be covered? Waiting for your responses, guys. Paradox and flaws. चलो ठीक है. Okay. Difficult questions from assumptions family of questions. Okay. Anything else? Any other demands, requests, suggestions? ठीक है. So I'll touch upon the concept of paradox and flaws, and I'll see if we can do assumption based questions as well in tomorrow's class. So I've taken note of these two suggestions. If there are any other suggestions for by people who are watching this stream after it has ended, you guys can tell me in the comment section today itself, ideally,
or tomorrow morning, and I'll cover that in tomorrow's class. ठीक है, चलो, thank you so much guys, thank you for attending, have a good day ahead, keep learning, keep preparing, signing off.